Good evening, friends, and welcome to this episode of Fund Manager Fridays with 5paisa.com. I'm Deepika Asthana, your host for the evening. Now, the big event for at least for the first month of the year has come and gone, and equity markets have obviously reacted positively to the budget. But अगर आप थोड़ा और expansive देखेंगे तो you will also see that yesterday the Bank of England raised interest rates, and this is for the second consecutive month. They increased it by 25 bips in December, and कल फिर से increase करा है 0.5%. So there is a lot of chatter happening in the market, and it's important to be aware of these many developments which are currently happening in the market and could impact our investment portfolio. So, joining us today to discuss the current market environment and also how specifically you guys as investors can position yourself in the backdrop of the current landscape is Mr. Vaibhav Shah, Head of Business Development, Strategy and International Sales at Mirae Asset Investment Managers India Private Limited. Hi, Vaibhav. Welcome. Yeah, hi Deepika. Thanks for having me on your show. Pleasure, pleasure. So, Vaibhav, I think there's been so much of chatter. Abhi, last 1 month, it doesn't really seem that it's only been one month into the new year. There's so much which has happened, and obviously, one of the points which has been dominating a lot of conversations is the news of interest rate hikes, and of course, there is some chatter around the budget as well. So, in the backdrop of such an environment, Vaibhav, can we start with maybe your view on both? How investors should approach equity and debt investments? Sure, Deepika. So I think so, like you rightly pointed out, we've started the year 2022 on a very interesting note. Mm, And 2021 has been very kind for investors. And after the correction that we saw in March 2020, mhm. investors had seen a brilliant rally in markets for the past 20 months. Right. And such kind of a rally where the large cap index, mid cap index, small cap index, all up more than 100% from their bottoms is Mm, something that investors usually don't experience in a very short period of time of about less than a 2 years period. So indeed. in Yeah. this backdrop, let's see how 22 started. And like you rightly pointed out, interest rates have started to move. And let's see what happened during the last 2 years. We had actually one third of the world at negative interest rates, and two-third of the world Mhm, at less than 2% of the interest rates. And when you have mhm. two-third of the world at so low interest rates, it's always a question of time when interest rate starts to inch up. Now, in Correct. India, what we had seen is um the Reserve Bank had been very focused on reviving growth, is still actually quite focused on reviving growth, and our Mhm, inflation has been within the RBI comfort zone of 4% plus minus 2% range. So sure. inflation is not a large concern for India. And hence, Mhm, Reserve Bank of India has, restrained itself from increasing rates. correct. Now, Mhm, in this context, when we see US markets, where the interest rates had become quite low, they had fallen mhm, to as low as 1%. mhm, And with inflation in US now going up to 7%, it's a clear question that the rates have to move up. Now, when indeed. globally interest rate starts to move up, Mhm, why does it impact Indian, bond rates or yields or other instruments? Is very clear mhm, because when the US is actually where the large part of the money is. So US holds mhm, $30 trillion of the treasury, and mhm. when the interest rate starts to move up, a lot of investors will move their money from emerging markets to US, back to US. Okay. And once Mhm, they do that, it impacts the currency and it mhm. impacts the flows coming into emerging markets, which is impacting both debt and equity markets. Sure. So that's Mhm, why we would have seen that the FIs have been constant sellers, both mhm, on the equity side and fixed income side, and that money has been also started to slowly move to the US. However, the fundamentals in India are much mhm, superior, like you would have seen in the speech presented at the budget. The government is looking mhm. at growth rates near to about 9%. Inflation Correct. is expected to be within this 4% plus minus 2% range. And hence Mhm, I would believe that whatever we've seen
in the rise of interest rates, maybe the Mhm. bond market has started to price in some of these things in advance before the Reserve Bank of India starts to increase rates. So, you know, a lot of the movement has Actually. also happened. Another very interesting data point, Vaibhav, can Deepika, I I just would share. interrupt Yeah, you for a second? sure, sure. अच्छा, so just आपने बोला that bond markets have started to price in this expected increase in rates. तो can you just for our listeners थोड़ा explain कर सकते हैं what do you mean कि वो price in हो गया है, yield बढ़ने लगे हैं, ऐसा कुछ है? And also Yeah, sorry to interrupt, but you know a lot of our viewers are expecting कि अगर हम थोड़ा हिंदी में भी उनको समझा सके, it will be sure, appreciated. So sure, please. sure. Yes. So, Deepika ji, like you mentioned, so Mhm. the GSEC yield जो थी have actually हाँ जी, gone up 50 से 60 basis points, ओके। हुँ, हुँ, while the Reserve Bank of India हुँ, has हुँ, not increased their interest rate. So Reserve इंक्रीज़ Bank ने हुँ, हुँ, rates बढ़ाए नहीं है तो भी yields 50 से 60 basis points बढ़ गई है. ऑलरेडी In बढ़ fact, गई। only after the budget yields 20 basis points बढ़ गई है. ओके, Which नोटेड, हाँ clearly जी। tells you that market has started to price in कि ये in future Reserve Bank will increase rates. हमारा इंक्रीज़ रेट। assessment है that Reserve Bank, and this is general consensus is हुँ, हुँ, in the market, is that Reserve Bank 50 basis points का rate hike कर सकती है in the next 6 months. इन द नेक्स्ट बट 6 आप मंथ्स, देख ओके। सकते हो अगर इवन इफ रिजर्व हुँ, बैंक वो टू इंक्रीज रेट्स बाय हुँ, हुँ, 50 बेसिस पॉइंट्स, यील्ड्स ऑलरेडी 50 60 बेसिस पॉइंट्स तो बढ़ गई है. बढ़ तो चुकी है। मार्केट के हुँ, लिए हुँ, कोई ये बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज नहीं होगा, क्योंकि अंडरस्टूड। मार्केट को ये हुँ, हुँ, एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी बिल्ड इन हो गई है. और बिल्कुल। एक हुँ, और हुँ, इंटरेस्टिंग चीज, दीपिका, विच आई वाज मेंशनिंग, इज हुँ, दैट हुँ, इन इंडिया द बैंकिंग सिस्टम हाँ जी। हैज डिपॉजिट्स ऑफ 1 lakh crore. हुँ, हुँ, Let me repeat, the entire banking system has about 1 lakh crore. और a हुँ, lot हुँ, of investors ना, अगर आप देखो तो बहुत अनहैप्पी थे, बिकॉज एफडी रेट्स जो पहले हुँ, 5-7 साल पहले डबल डिजिट्स के आजू बाजू थे, 8-10%, बिल्कुल। वो गिर हुँ, हुँ, के 5% के आजू बाजू हो गए थे. करेक्ट। और हुँ, हुँ, इंडिया में अगर आप देखो तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आज भी फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करते हैं. तो बिल्कुल। हुँ, बैंकिंग सिस्टम में जहां 1 लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो रहा था, हुँ, हुँ, वहां पीपल वर अनहैप्पी विथ 5% इंटरेस्ट रेट्स. अगर आप देखिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स में रिटेल का अगर आप फ्लोज देखोगे तो खाली अबाउट 15-1 लाख करोड़ है. और मे बी इसमें से 5-7 लाख करोड़ आप देखोगे लास्ट 2 साल में आए जब इंटरेस्ट रेट्स काफी नीचे आ गए. तो अगर इंटरेस्ट रेट्स थोड़ा ऊपर भी होते हैं तो इन्वेस्टर्स के लिए खराब न्यूज नहीं है, क्योंकि दे यू नो दे विल स्टार्ट गेटिंग बेटर रिटर्न्स ऑन देयर एफडीज. अगर वो देखें तो डेट म्यूचुअल फंड्स में भी उनकी यील्ड जो 4.5-5% हो गई थी, आज वो 6.5-7% हो गई है. तो उनके रिटर्न पोटेंशियल आज इंप्रूव हो रहे हैं. एज इन्वेस्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए टू हैव अ कंप्लीट असेट एलोकेशन. तो इक्विटी मार्केट जैसे हमने बात की 100% रैली हो गई है, पर आप खाली इक्विटी में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो. आपके पास इक्विटी भी होना चाहिए, डेट भी होना चाहिए, कमोडिटीज भी होना चाहिए, रियल एस्टेट भी होना चाहिए. तो आपके पास एक कंप्लीट एसेट एलोकेशन होना चाहिए. तो अगर डेट की यील्ड्स बढ़ जाती है तो इन्वेस्टर्स को अनहैप्पी नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप अगर देखें अब इंक्रीमेंटली जो पैसा है वो हायर यील्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. और दीपिका, जस्ट वन मोर पॉइंट, एक क्वेश्चन ऑलवेज आता है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा हो जाते हैं तो क्या इक्विटी मार्केट्स के लिए खराब है. तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं ऑन आर इक्विटी व्यू, कि अगर आप देखो एक इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाते हैं तो कंपनीज के लिए बहुत फायदा होता है, बिकॉज अगर एक 1% इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए तो कंपनीज को उतना कम देना है इंटरेस्ट बैंक को, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बढ़ जाती है. और कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है तो उनका पी एक्सपैंड हो जाता है. सो ऑलवेज वी कीप सेइंग व्हेन इंटरेस्ट रेट्स गो डाउन इट इज पॉजिटिव फॉर इक्विटीज. बट अगर आप लास्ट 2-3 साल में देखो तो इक्विटी मार्केट्स के लिए काफी अच्छी चीज हुई है. जैसे गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट 35% से 25% किया था, और अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया और उसके बाद 2 साल पेंडेमिक हो गया. तो उसका हम पूरा फायदा कंपनीज की बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट में नहीं देख पा रहे. Over the next 2 years, we are expecting that profitability for Indian companies and Nifty 50 should grow by 20% CAGR over the next 2 years. तो हम अगर देखें तो 40 से 50% अर्निंग्स ग्रोथ दिख रहा है इक्विटी मार्केट्स में.
ओके। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है फॉर स्टॉक मार्केट। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स थोड़ा बढ़ता है, तो कंपनीज़ को थोड़ा लॉस है, बट उसके सामने अगर आप देखो कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज़ ऑफ द टैक्स रेट्स, बिकॉज़ डिमांड रिकवरी अब वापस आने लग गई है। ऑल ऑफ अस हैव नाउ करेक्ट। स्टार्टेड टू go to office, schools have started, normal lives will start working. So I think so demand will pick up. So outlook for equities will be good. So overall my request to investors कि आप एक asset allocation strategy follow करिए. Equity, debt, commodities, cash सबको combine करके तो आपका investment experience काफी अच्छा रहेगा. परफेक्ट। वेरी इंटरेस्टिंग वैभव। और जैसे आपने ये समझाया कि क्या होता है कि जैसे हम लोग सुनते हैं, बिकॉज वी बीन यूज टू दिस लो रेट रिजीम फॉर द लास्ट 2 years, कि इंटरेस्ट बढ़ने वाला है, एकदम थोड़ा सा टेंशन होने लगता है कि अरे हाउ विल इट इम्पैक्ट आवर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। बट लाइक यू सेड कि एक तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो our fixed deposit rates will also increase. सामने even equity market, equity like from a company perspective, while बॉटम लाइन में थोड़ा इम्पैक्ट आ जाए बिकॉज ऑफ दैट, पर टॉप लाइन ग्रोथ भी होएगा बिकॉज लाइक यू सेड डिमांड एनवायरनमेंट, डिमांड पुल विल बी देयर एंड दैट कुड सी companies could see the growth coming from there. And of course bond yields bhi बढ़ जाएंगी, so even from that perspective debt investments offer a good opportunity. And you also mentioned asset allocation, and that's really great because I was actually going to, that was going to be my next question also, कि इन्वेस्टमेंट्स तो सब अच्छे लग रहे हैं, लेकिन एज एन इन्वेस्टर सम इन व्हाट माइट बी ग्रेट फॉर मी एज एन इन्वेस्टर माइट नॉट बी सो गुड फॉर यू, राइट, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर की कितना इक्विटी इन्वेस्टमेंट करा, कितना डेट. तो कैन वी ब्रीफली जस्ट डिस्कस maybe 2 to 3 factors which me like any individual needs to look at when they create their own asset allocation strategy? Sure, Deepika. So, जैसे आपने बताया, there is a very famous saying by Warren Buffett which says, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Yeah. Mhm, मतलब अगर जहां मार्केट में बहुत लोग डर रहे हैं तो आप आपके mhm, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा दो, और जब आपने देखा कि आपकी नेबर को देख के आप एनवी हो रहे कि उसके पास बीएमडब्ल्यू आ गई, मर्सिडीज आ गई, और पान वाला भी बात कर रहा है कि इक्विटी खरीद लो, तब आपको थोड़ा डर जाना चाहिए. और आप okay. कैसे कर सकते हो? अगर आपने Mhm, आपका इक्विटी एक्सपोजर कम कर दिया, तो आप mhm, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो? यू शुड mhm, हैव अ कंप्लीट एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी. और हमने mhm, हिस्टोरिकली देखा है कि एसेट एलोकेशन एक्चुअली mhm. बहुत सारी स्टडीज हुई है जो बताती है ड्राइव्स 90% ऑफ द इन्वेस्टर्स रिटर्न. और ये Wow, बहुत okay. इंपॉर्टेंट है, मैं वापस रिपीट करता हूँ, 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिटर्न आर Mhm, एक्चुअली कमिंग फ्रॉम असेट एलोकेशन. और ये चीज पे हम सबसे कम ध्यान रखते हैं. हमारा टाइम mhm. फोकस क्या रहता है? मार्केट 60,000 है, मार्केट टाइमिंग पे ज्यादा है, या मैं हम Correct. सोचते हैं हम मैं रिलायंस खरीदूं, या मैं आईटीसी खरीदूं, या मैं कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदूं. यहाँ पे Mhm, हमारा ज्यादा फोकस है. सो मार्केट टाइमिंग एंड सिक्योरिटी सिलेक्शन इज एक्चुअली लेस देन 10% ऑफ योर mhm, ओवरऑल रिटर्न्स. अगर आप असेट mhm, एलोकेशन पे ज्यादा फोकस रखेंगे तो आपका mhm, एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा होता है. उसका ये mhm, रीजन होता है कि असेट mhm, एलोकेशन है ना, आपको एक बैलेंस दे देता है बिटवीन mhm. रिस्क एंड रिवॉर्ड. Okay. और व्हेन इट ब्रिंग्स दिस बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिवॉर्ड, तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है. तो Mhm, लाइक दीपिका, यू सेड व्हाट शुड एन इन्वेस्टर थिंक फॉर. सो mhm, फर्स्ट आप जब भी इन्वेस्ट करिए, माय mhm. रिक्वेस्ट इज आप पहले एक गोल अलाइन कर दीजिए कि आपने ये क्यों इन्वेस्ट किया है. Okay. सपोज आपने एक लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप Mhm, ये कर दीजिए कि ये मैंने इन्वेस्टमेंट किया है फॉर माय चिल्ड्रंस एजुकेशन. mhm. एक अगर Okay. आप गोल अलाइन कर दोगे तो आप मार्केट के लेवल को देखना कम कर दोगे. फर्स्ट, सो Correct. फर्स्ट यू Mhm, शुड हैव अ गोल अलाइंड फॉर ईच इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इससे आपका फोकस रिटर्न्स के बदले गोल अचीवमेंट पे हो जाता है. mhm. सेकेंड इज, जब आप इन्वेस्ट करते हो, यू शुड पुट योर असेट एलोकेशन बेस्ड ऑन योर टाइम होराइजन. कि Okay. अगर सपोज Mhm, आपको एक गाड़ी खरीदनी है और आपको mhm, इन्वेस्टमेंट करना है, तो mhm, आपको गाड़ी जल्दी खरीदनी है. 5 साल के 10 साल के बाद तो गाड़ी नहीं खरीदोगे, राइट? mhm. तो आपका एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी होना चाहिए बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स. तो अगर आपका Okay. गोल है सपोज बाइंग अ कार विच इज इन अ Mhm, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो आपका mhm, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ज्यादा डेट फंड्स में, हाइब्रिड फंड्स में, mhm, रादर mhm. देन इक्विटी फंड्स, Right. बिकॉज वहां पे Mhm, वोलेटिलिटी कम रहती है. तो mhm. आपका टाइम होराइजन डिटरमिन करता है आप कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हो.
Sure. नेक्स्ट Mhm. चीज है आपकी रिस्क टॉलरेंस. अगर आप एज एन इन्वेस्टर डर जाते हो अगर मार्केट 10% या 20% गिरता है, तो डोंट Mhm. इन्वेस्ट इन मार्केट्स. अगेन अ वेरी Mhm. ब्यूटीफुल सेइंग, वॉरेन बफेट कीप सेइंग कि Mhm. you should invest in markets assuming that markets are closed for the next 10 years. Correct. Right. And if you are comfortable with even stocks in falling 15%, then only invest in stocks, because Stocks. Mhm. markets short term में volatile होते हैं. Like he said, Correct. in the short term markets are like a voting machine and in the long term Mhm. they are like a weighing machine. तो short term की volatility आपको डर लगता है, तो Mhm. आप प्लीज इक्विटी में एक्सपोजर कम रखिए. तो नो Correct. योर रिस्क टॉलरेंस. Mhm. Mhm. एंड द लास्ट इज रिस्क और रिटर्न को आप बैलेंस करिए. जैसे हम Okay. ऑलवेज बोलते हैं, नो पेन एंड देन नो गेन. इफ यू No. डोंट वांट टू टेक एनी पेन, तो आपको फायदा भी नहीं मिलेगा. तो ये Mhm. सब फैक्टर्स आप कंसिडर करके एक Mhm. असेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी बनाइए. और Mhm. असेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी के लिए एक रिक्वेस्ट है, वर्क विद गुड फाइनेंशियल एडवाइजर्स, पीपल हु कैन गाइड यू टू मेक अ Mhm. फाइनेंशियल प्लान, और आपके साथ मिलके एक असेट एलोकेशन बना के रेगुलरली रिव्यू करो. Mhm. दैट कैन Mhm. हेल्प यू लॉन्ग टर्म में अचीविंग योर गोल्स. Mhm. Interesting. Uh, Actually, आपने जो लास्ट पॉइंट बोला अबाउट अलाइनिंग योर रिस्क विद रिटर्न, वो बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज़ कुछ to like achieve your goals to certain level of your goals and a certain return थोड़ा तो रिस्क लेना भी पड़ता है. ऐसे तो नहीं है कि आप सिर्फ डेट इन्वेस्टमेंट्स में पूरा अपना पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करके you can achieve all the returns that you want. So that alignment is important, and of course the point that you brought about having a financial advisor is also very relevant क्योंकि all of us are unique. Like I said, what is great for me might not be great for you, and maybe a financial advisor can help us understand each of these requirements what you have just highlighted and then create an asset allocation strategy. So that's very interesting. But Weber, one thing I've been hearing for last couple of years at least, and more so in the recent past, is about these hybrid category of mutual funds, where they invest in both debt and equity, and to that extent take care of a little bit of asset allocation for individual investors as well. So can we like discuss that a little bit, and maybe our investors could understand more about hybrid funds? Sure. So, very important thing, Deepika, you brought is what are the solutions for asset allocation. तो हमने डिस्कस किया कि asset allocation करना चाहिए. तो आप जी. कहाँ इन्वेस्ट करिए जहाँ से आप फायदा ले सकते हो हम्म, of both equity, debt, commodities, everything. तो जी. हमने देखे हैं कि म्यूचुअल फंड रूट्स में बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स है विच वी हम्म, कॉल एज हाइब्रिड फंड्स. तो हाइब्रिड फंड्स में वी हैव फंड्स स्टार्टिंग विद कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, जहां हम्म, 20% एलोकेशन रहता है इक्विटी में और हम्म, 80% एलोकेशन रहता है टू जी. डेट. देन वी हैव गॉट इक्विटी सेविंग्स फंड, जहां 30 to 40% इन्वेस्टमेंट्स होता है इक्विटी में और हम्म, बाकी इन्वेस्टमेंट्स होता है इनटू डेट. Then debt. we have balanced funds where it is exactly balanced 50% equity, 50% debt. Then we हम्म, go to aggressive hybrid category जहाँ हम्म, 65-70% allocation रहता है towards equity and the हम्म, balance towards debt. And हम्म, then we have got a dynamic asset allocation category जो based on market movement इक्विटी और डेट के बीच में allocate कर देता है. So very interesting set right, of right. categories of funds are there for investors. Uh, हम्म, like Deepika ji, you mentioned, each product will be based on what is the tenure that they want to invest in. So अगर आपका हम्म, investment time frame shorter है, return हम्म, expectations कम है, तो आप equity savings fund या conservative funds भी ले सकते हो, hybrid fund. और आपको थोड़ा हम्म, ज्यादा रिस्क लेना है तो आप हम्म, aggressive hybrid funds ले सकते हो. एक हम्म. बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ दीपिका जी. हाँ जी. Like we were analyzing aggressive hybrid funds. So हम्म, we've seen a fund which has 70 to 75% equity and हम्म, 25-30% debt हम्म. has actually outperformed the 100% equity fund over 5-10 year Okay, period. तो that's इन्वेस्टर्स interesting. को लगता है मैं 100% इक्विटी में डालूंगा तो मेरा रिटर्न्स ऑलवेज बेटर होता है. बट जैसे Correct. हमने हम्म, बताया कि मार्केट्स में एक साइकिल होती है. तो कभी हम्म, इक्विटी मार्केट्स अच्छा करती है, कभी डेट मार्केट्स अच्छा करती है. अगर आप हम्म. क्रिकेट पार्लेंस में देखो तो कभी हम मैच इंडियन की बैटिंग की वजह से जीत सकते हैं, कभी बॉलिंग की वजह से, कभी फील्डिंग, कभी ऑलराउंड परफॉर्मेंस. Correct, राइट. right. तो हम्म, इन दैट सेम वे
there are cycles when equity does well, and there are Mhm. cycles where equity does very bad, but डेट के Sure. रिटर्न्स अच्छे Mhm. होते हैं इन दैट पीरियड, Right. और वो Mhm. आपके रिटर्न्स को स्टेबलाइज कर देते हैं. तो Mhm. 75% equity portfolio has Mhm. actually 75% equity and 25% debt portfolio has हाँ actually जी. outperformed 100% equity portfolio. Mhm. ये अगेन एक चीज बताती है why investors should do asset allocation and why Mhm. investors should Mhm. invest based on their risk profile. तो आप कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न जनरेट Mhm. कर सकते हो. सो बहुत सारे कैटेगरीज Interesting. ऑफ फंड्स है. आप आपके एडवाइजर्स के साथ बैठ के एक आपके लिए कस्टमाइज सोल्यूशन बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल एंड टाइम Mhm. होराइजन डिसाइड कर सकते हो. Mhm. So I think Vaibhav, जो आपने अभी that statistic that you shared with us, and I would like to reiterate it because it's kind of an eye opener for me also that a portfolio where 75% is equity and 25% is debt will outperform a portfolio which is 100% equity over a certain period of time. Important to say that as well, right? नहीं But नहीं, इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल ट्रेंड्स. हाँ जी, सो एंड वीव सीन दैट 75% अगर आप देखोगे तो ऐसे जैसे हमने बात की अलग अलग साइकिल्स है, बट correct. डेट इक्विटी साइकिल्स ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम help you to navigate this. Mhm. So basically, I think it all comes down to maybe a term which we've not yet used, but you've definitely alluded to it at the beginning of a conversation to optimize your risk-adjusted returns. और Yes, basically your returns for every level of risk that you take, आपको वो optimize करना चाहिए. And yes. the hybrid funds again based on every individual's risk profile and return requirements. There is, like you mentioned, a host of different options starting from conservative to aggressive and then dynamic, which our investors can consider based in consultation with their advisor. So thank you. That is very interesting. And Vaibhav, I think you will agree that any conversation that we're having on personal finance and investment, there is something that we often ignore but we should not ignore is the tax planning aspect of it. Tax हम लोग तभी सोचते हैं जब at the end of the year जब वो कटने लगता है तब, but if planned judiciously then we can minimize our tax outgo with great investments. So it kind of has a double effect कि आपका tax outgo भी reduce होता है, and if you do it properly you can also generate returns. So let's just I think nicely wind up this conversation with how our investors can do good tax planning. श्योर. सो दीपिका जी, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रेज किया ऑन हाउ यू कैन मेक इट मोर टैक्स एफिशिएंट, बिकॉज Mhm. ये साल बजट में इन्वेस्टर्स के लिए तो कुछ ज़्यादा था नहीं. सो Correct. मेकिंग इट मोर टैक्स एफिशिएंट इज वेरी वेरी Mhm. इंपॉर्टेंट. एंड देयर इज अ वेरी Right. फेमस एड फ्रॉम मारुति, इफ ऑल ऑफ यू रिमेंबर, Mhm. जिसमें द Mhm. टैगलाइन वाज कितना देती है, which is how much mileage does a car give. Yes. And people used to always Mhm. think if that is the tagline they used to sell their car, not on features or what it was, but Mhm. because Indian people were so cost conscious on how Mhm. to make sure they get the best value out of it. So I Correct. think so Mhm. kitna deti hai is the same thing which tells the Okay. investor behavior of how they Mhm. want to maximize the returns when they do Mhm. it, in a tax efficient manner. And I Mhm. can tell you, this is a time that a lot of, and I work in a foreign company, so we have this Jan Mhm. December cycle, and Mhm. we just recently got our bonus. And when we Mhm. get the bonus, we are very unhappy after seeing the letter, and when the money gets credited in the bank, क्योंकि हमको Correct. पता चलता है कि कितना परसेंटेज हमने गवर्नमेंट के लिए काम किया है, बिल्कुल. राइट. सो I believe that tax planning is a Mhm. very, very critical decision which investors should do while Mhm. making investments. Mhm. So, Deepika, just to add, अगर हमने देखा, हमने इसके पहले हाइब्रिड फंड्स की बात की. हाँ जी. सो अगर मैं एक एग्जांपल दूं एज एन इन्वेस्टर, Mhm. मेरे को 75% बेस्ड ऑन माय रिस्क प्रोफाइल, 70 Mhm. 75% होना चाहिए एक्सपोजर टू इक्विटी, और Mhm. 25 30% एक्सपोजर होना चाहिए डेट में. So Mhm. rather than buying many equity funds and Mhm. buying many debt funds, Mhm. आप अगर सपोज वो डेट फंड्स बेचोगे तो आपको एक टैक्स लायबिलिटी आएगी. Correct. अगर आपने एक हाइब्रिड फंड ले लिया तो Mhm. उसको इक्विटी फंड का टैक्सेशन मिल जाता है. So Right. one Mhm. smart way of doing tax savings or tax investment Mhm. is by investing, say, even in a hybrid fund,
where 70%, 75% is in equity, and the remaining 25, 30%, which is your debt, actually gets the benefit of equity taxation. So instead of 30%, it will start move to a 10% taxation. So that's a Very very true. smart way of doing tax planning within your existing investments. Of course, there is a beautiful category that government has allowed under ATC, and ATC has many investment options, which is right from PPF to NPS to insurance and ELSS. अगर आप देखो, जी हाँ. ELSS is a product which is, I would say, very underrated. अगर आप देखो तो ये सबसे ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का. उसका रीजन है कि आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है. इसका जी लॉक इन हाँ. पीरियड आप देखो तो लोएस्ट है, ओनली 3 ईयर लॉक इन पीरियड है. और आप अगर देखो तो रिटर्न्स that ELSS category has generated has been more than 15-20% over last 1 year, 3 year, 5 year, 10 year, and even longer, as long as 20 years. तो Okay. ELSS कैटेगरी ने एक्चुअली PPF और ये सब कैटेगरीज से बहुत बेटर रिटर्न्स दिया है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो अगर एज एन इन्वेस्टर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना है and you want to also do tax planning, then ELSS is a very beautiful way of investing in इक्विटी मार्केट्स. एंड एक बहुत अच्छी तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करो, अगर आप, जैसे हम ऑलवेज बोलते हैं, SIP एक अच्छी सिस्टमैटिक वे जी हाँ. ऑफ इन्वेस्टिंग है, तो आप ELSS में भी सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर सकते हो टू टेक एडवांटेज ऑफ वोलेटिलिटी. तो आप ELSS फंड्स का एडवांटेज ले सकते हो फॉर योर टैक्स प्लानिंग. हाइब्रिड फंड से आप आपके पोर्टफोलियो का टैक्स कम कर सकते हो. जैसे आर्बिट्राज एक बहुत अच्छी कैटेगरी होती है जी हाँ. जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको इक्विटी फंड का टैक्सेशन मिलता है. तो इन दिस सिनेरियो व्हेन मार्केट्स थोड़े वॉलेटाइल ज्यादा है, हमने देखा है कि आर्बिट्राज रिटर्न्स के रिटर्न्स लिक्विड फंड्स और उन कैटेगरीज से बेटर रहते हैं टैक्स एफिशिएंट मैनर में. तो वो आर्बिट्राज भी एक अच्छी कैटेगरी है जो इन्वेस्टर्स यूज कर सकते हैं फॉर बेटर टैक्स प्लानिंग. सो आई थिंक सो ये 3-4 प्रोडक्ट्स है जो इन्वेस्टर्स यूज करने से अपने रिटर्न्स मोर टैक्स एफिशिएंट बना सकते हैं. Excellent, excellent. I mean, like I had said in the beginning, and I think I'll just say that again because आपने भी वही बहुत अच्छी तरह से हमको explain करा है that there are certain investment options, whether it's hybrid funds or ELSS or even arbitrage funds, जो tax out go तो कम करने में मदद कर ही सकते हैं, and उसके साथ अपना long term wealth creation goals जो है, it can also help us, you know, accomplish those goals, and especially जो आपने बोला through an SIP, तो फिर SIP के भी जो multiple benefits होते हैं वो भी हमको आ सकते हैं. So great, Vaibhav. I think in today's conversation we've pretty much covered the entire gamut. We've covered great ground starting from कि क्या outlook है, and especially my biggest takeaway is कि भाई interest rate increase से घबराओ मत. At least थोड़ा increase priced in भी है, and overall it is positive for the economy and multiple investments in asset classes. And of course जो आपने investment categories or options दिए both for wealth creation and for tax saving and including the focus on asset allocation, so that has been very valuable. So thank you for that. Just if you would like to wind up the conversation with a few last words. Yeah, so Deepika, I would again want to use a quote of Warren Buffett. I'm sorry, मैं ज्यादा No, no, एग्जांपल दे रहा हूँ, बट that's अगर आप देखो कि अगर आप इन्वेस्टिंग में ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो एक इन्वेस्टमेंट गुरु होने चाहिए जिससे आप सीख पाओ. और of course, देयर इज नो वन बेटर देन वॉरेन बफे, एंड ही indeed. कीप सेइंग रूल नंबर 1 इज नेवर लूज मनी, एंड रूल नंबर 2 इज नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1. सो Okay. अगर इन्वेस्ट करना है तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम वेल्थ क्रिएट करें, एंड वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमको बहुत डिसिप्लिन रहना चाहिए. डिसिप्लिन्ड by investing through SIPs, by following asset allocation, we can be a very very disciplined investor. और एक चीज ऑलवेज मार्केट ने बताई है कि अगर आप आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन लंबा रख दो तो वोलेटिलिटी आपकी एनिमी नहीं रहती, आपकी फ्रेंड बन जाती है. तो आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, और कोई भी इन्वेस्टमेंट को आप एक गोल के साथ अलाइन कर दो.
और रिटर्न्स को चेज मत करो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस बहुत बेटर हो जाएगी. एंड अगेन, लाइक वॉरेन बफे, our objective is to create wealth, and help our families and the society, which you बिल्कुल. can all do when you start investing wisely. So happy investing to everyone. Invest wisely is my only request to everyone. Don't look at your neighbor, how much money he is making, that his risk profile and जी हाँ. yours is not the same. So invest based on your risk profile, uh, and invest in a very disciplined way. Perfect, perfect. That's a beautiful note to actually wind up what we have just discussed. कि अपने आप को देखिए, अपना risk profile को देखिए, invest wisely, and yes, important last words. So thank you very much, Vaibhav. Thank you very much for joining us today. It's been a great conversation. Much appreciated. Thank you, Deepika. And thank you, viewers, for tuning in. I hope the conversation was as interesting for you as it was for me. And we will then see you next week. Thank you very much.